coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf and also return of his body back to Pakistan. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. So, ladies and gentlemen, I really commend your efforts and appreciate your contribution to hold this very important forum. And on this occasion, I acknowledge and laud the work that the Pakistan Journalist Safety Coalition is doing to promote the cause of journalists, their safety, security, and protection in their line of duty. This forum today also marks the 10 years of UN Plan of Action in Asia. It is being held to celebrate the key achievements of Pakistan and other countries of Asia with regard to the implementation of the UN Plan of Action on safety of journalists and the issues of impunity. Ladies and gentlemen, it's an article of faith with me and, of course, as well as with you, that democracy and media freedom reinforce each other. They go hand in hand. And let me state with fullest authority at my command that despite the checkered history, Pakistan is and always will be a democracy. Of course, there have been stints where we had military dictatorship for 33 years, but then we returned to the system of democracy through collective efforts and sacrifices. And let's hope and pray to God that this nascent democratic dispensation becomes stronger by the day through our collective efforts and the science in the right direction. The 1973 Constitution is an outcome of consensus building by our political leadership, and they were giants. Many of them are not in this world, but despite their differences, despite their internal issues, they got together for a very sacred cause and rose above their likes and dislikes and differences and carved out a constitution which is still a binding force for Pakistan's federating units, a force which is so strong that earthquakes and floods could not disturb this arrangement, and therefore 1973 Constitution is a very sacred document. The principles of freedom of expression, of a vibrant and free media, and of freedom of information and are important pillars of any democratic system. My government strongly believes that these freedoms and rights are sacrosanct and remain at the heart of the development of democracy. We are committed to supporting all efforts that promote and uphold these shining principles. The UN Plan for Action on the Safety of Journalists and the issue of impunity, endorsed by the UN Chief Executive Board in 2012, addresses the issue of journalists'
safety. When in 2013 Pakistan was selected as a pilot country for the implementation of the plan, the then pml-n government, headed by Prime Minister Nawaz Sharif, fully endorsed the initiative. It has since always supported all efforts to achieve the goals of protecting media freedom. Pakistan became the first country in Asia to pass legislation on the safety of journalists, both at the federal level and the provincial level in the province of Sindh. And my party and other parties in this coalition government will continue to support the ongoing efforts in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Punjab to legislate on the safety of journalists. Last year, the Parliament of Pakistan passed the landmark Protection of Journalists and Media Professionals Act after thorough deliberations and the consultations with all stakeholders, principally the journalistic bodies. As evidence of how deeply political parties believe in democracy and the principles of free speech and a free and vibrant media, the law was passed unanimously by the National Assembly of Pakistan. Mr. Haman Mir has raised a pertinent point that Section 6 was mysteriously included subsequently. Well, I will certainly look into it and have this consultative process with you and see how we can overcome this impediment. The Protection of Journalists and Media Professionals Act recognizes the rights of journalists and media professionals against ill treatment, harassment, and intimidation, including the loss of life. It recognizes the right to privacy and independence in the performance of their duties. It seeks to protect media persons from all kinds of aggression and expects an independent commission for the protection of journalists and media professionals. I understand, ladies and gentlemen, and also acknowledge that there are still challenges facing our journalists and media practitioners in the performance of their responsibilities as outlined in the report and like elsewhere in other parts of the world. However, I feel that these require sustainable engagement and collaboration among all the stakeholders such as the state, media, civil society, parliament, the UN, and other international bodies. This is the only way to combat impunity of crimes against journalists everywhere in the world, including Pakistan. My government believes that no journalists or information practitioners or human rights defenders should be called out or attacked for exercising their freedom of expression as guaranteed under the Constitution of Pakistan. I would also like to appreciate the contribution of the international community in supporting the democratic, economic, and social development of Pakistan, especially the UNESCO and countries like Denmark, Norway, and France. Pakistan looks to strengthen and deepen its relationship with Europe, especially economic and trade ties with European countries, and appreciate the GSP Plus status that helps Pakistan strengthen its economy. We hope this status will continue and our relationship will further grow from strength to strength. And that also means we would like to cultivate our relation with other countries like Britain, United States of America, and East Asia, Far East, and of course Central Asian countries, and of course South Asia, because this is how the global world is meant to be, to have
closer interaction to alleviate poverty, unemployment in this world. Without that, this world cannot progress. Ladies and gentlemen, I'm sure the Islamabad Journalists Forum will hold important deliberations on the challenges facing working journalists and media persons. Let me take this opportunity to reiterate my government's firm commitment to facilitate the implementation of federal safety legislation for journalists. It has been dormant, I agree, and I'm not going to shift blame to any political entity or government. Suffice it to say that we will take it up proactively and complete the steps sooner rather than later. We also look forward to the outcomes and recommendations of this forum. Let me assure you that the government would like to be part of the efforts aimed at making Pakistani democracy stronger through greater free media. There can be no democracy without the freedom of expression and without breaks or shackles. I wish the organizers of this event all the success. I thank you all. Pakistan, Pindabad. जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत तकरीब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब आप मुलाहजा कर रहे थे। उनका कहना था कि इजहार राय की आज़ादी हर माशरे के लिए ज़रूरी है। सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी में सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का होना लाजमी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत अफसोसनाक वाक़या है। इस सिलसिले में कीनिया के सदर से बात की। अक़वाम मुत्तहिदा के 10 साला प्लान ऑफ एक्शन के तहत पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी बतौर बेहतर तरीके से निभा रहा है। तमाम सहाफ़ी मुझे अजीज़ हैं और सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मीडिया किसी भी जमहूरी रियासत में अहम सतून की हैसियत रखता है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कैपिटल व्यू, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मीरपुर के दौरे के हवाले से, जहाँ पे मंगला डैम के 5 और 6 जो यूनिट्स हैं उसकी तजदीद व मरम्मत के बाद इफ्तिताह कर दिया गया है और इसके लिए जो है US गवर्नमेंट ने जो है इमदाद फराहम की है, ताउन किया है और US के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया है। खिताब में उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जी कि पाकिस्तान में जो हाइडल के जो पोटेंशियल है, और हाइडल का पोटेंशियल कहा जाता है 50 से 60 हज़ार मेगावाट है, जो पाकिस्तान की ना सिर्फ ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है सरप्लस जो है उससे मज़ीद भी फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद आज 70-75 साल हो गए हैं, हम उस फैसिलिटी से, यूटिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा सके। इस पर हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। जनाब, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया रशीद साफ़ी साहब ने, नामवर तजज़ियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ताहिर नईम मलिक साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, तजज़ियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। स्टार्ट कर लेते हैं जी। साहब इससे पहले मैं आपकी से सवाल पूछूं। एक रिपोर्ट जो है हमने तैयार की है, सबसे पहले रिपोर्ट शामिल करते हैं प्रोग्राम में, फिर बात करते हैं दोबारा इस पर। दुनिया में तवानाई के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये तवानाई का बहरान ही है जिसकी वजह से मईशतों को महंगाई में इजाफे, अफरात ज़र या इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तवानाई का मसला दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद रोज़े अव्वल से ही इस संगीन मसले को हल करने की भरपूर कोशिश की है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने मंगला पन बिजली के यूनिट 5 और 6 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंगला पन बिजली के मंसूबे में अमरीकी ताउन पर मशकूर हैं। मंगला पन बिजली मंसूबे में ताउन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की मिसाल है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका ने मंसूबे के लिए $150 मिलियन दिए और सन 1960 की दिहाई में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मंगला पन बिजली मंसूबा अहमियत का हामिल है, जिससे सस्ती बिजली फराहम होगी। पाकिस्तान पन बिजली, विंड पावर और दीगर ज़राए से बिजली की पैदावार के ज़राए पर काम कर रहा है और मंगला डैम ने मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौल व फ़ेल में तज़ाद के अमल को ख़त्म करके हमें मुल्क के लिए आगे आना होगा। जी, इस पे बात करते हैं। जी रशीद साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त तक हम जो पन बिजली हाइडल जो पावर है पाकिस्तान के पास, पोटेंशियल है हाइडल का, उससे भरपूर फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? बहुत शुक्रिया जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हाइडल पावर जो है उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अगर आज हमारी एनर्जी सेक्टर से जो हम हाइडल से बिजली पैदा कर रहे हैं उस सेक्टर को मिनहा कर ले, माइनस कर ले, तो शायद पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाए। तुरबेला, मंगला, वर्सक, गोमलजाम, ये कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिस पे इस वक्त हमारी पूरी एनर्जी जो है उसका पूरा सेक्टर उसी पे खड़ा है। अब इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना चाहिए और इसका तलाश में हमें ज़्यादा कोई रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। माजी की हुकूमतों में कभी भी इस सेक्टर को वो तवज्जो नहीं दी गई जो तवज्जो दरकार है इस शोबे को। हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि जब भी गर्मी का पीक सीज़न होता है तो हम 7-8 हज़ार मेगावाट मिनिमम ये हमारा शॉर्ट फॉल होता है और ये आज से नहीं है, ये सालों से ये शॉर्ट फॉल हम फेस कर रहे हैं, लेकिन किसी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। माजी करीब में हमने देखा था कि प्रीवियस गवर्नमेंट में डैम बनाओ एक तहरीक चली और उसको जिस तरीके से उछाला गया, जिस तरीके से अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज खुद नोटिस ले लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज खुद नोटिस ले लिया है। समाअत आज दिन 12:30 बजे होगी। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सहाफ़ी अरशद शरीफ उनके कत्ल के हवाले से आज चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया है और आज इस नोटिस पर समाअत 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। समाअत आज दिन 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, जबकि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी इत्तलात को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर आज खुद नोटिस ले लिया है और इस केस की समाअत होगी आज दिन 12:30 बजे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, जबकि इसी केस की समाअत के सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी बराए इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज खुद नोटिस ले लिया है और समाअत आज दिन 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस, इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी नोटिस लिया और इस मामले को टेकअप करते हुए कीनिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राब्ता भी किया था ताकि तहकीकात में मावनत हो सके। इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर आज खुद नोटिस लिया है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।